हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो अब हम बात करने वाले हैं दैट इज़ द मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटर इन द EMMI. Okay, so for the in last session we have seen that measurement of inductor, and for that we have used a different AC bridge. Okay, so for same thing is here. So to measure the value of capacitor we have we are using the different AC bridges. Okay, and the principle mostly remains same. ओके तो ब्रिज का जो भी प्रिंसिपल है ये किस प्रिंसिपल पे वो वर्क कर रहा है. सो दैट नल पोजीशंस प्रिंसिपल जो है, ओके, पोटेंशियल सेम होगा उसके अक्रॉस में, तो ज़ीरो करंट फ्लो होगा. तो जो फॉर्म्स आर जो हम यूज़ करते हैं ब्रिज में, वो उसको हम कंपेयर करके अननोन वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग द नोन वैल्यू. ओके, सो फॉर कैपेसिटर्स वी आर यूजिंग द स्केरिंग ब्रिज. Okay, the Schering bridge are used to measure the capacitor of capacitor, dissipation factor, and properties of the insulator, capacitor bushing, insulating oil, and other insulating material. Okay, so mostly to measure this type of value we are using this Schering bridge. It is one of the most commonly used method AC bridge to measure the AC bridge. The Schering bridge work on the principle of balance the load on the arms. Okay, so here you can see the circuit for that. Okay, Schering bridge. Okay, so here you can see the capacitor, okay, C1, and value of that resistor, that is R1, C2, then we have a capacitor C4, that is R4 is connected across that. Okay, so let's say C1, that capacitor whose capacitance to be determined, R1 a series resistance representing the loss of capacitor C1. ओके, उसको रिप्रेजेंट करेगा. C2 क्या है? स्टैंडर्ड कैपेसिटर है C2. द टर्म स्टैंडर्ड कैपेसिटर मीन्स द कैपेसिटर इज फ्री फ्रॉम द लॉस, आइडियल वी कैन सी. देन वी हैव R3, दैट इज अ नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस. R3 दैट इज अ प्योर वी कैन से रेजिस्टर, प्योर रेजिस्टर. C4 दैट इज अ वेरिएबल कैपेसिटर. R4 दैट इज अ वेरिएबल नॉन इंडक्टिव रिएक्टेंस, sorry, resistance parallel with the variable capacitor. These two are the parallel thing. Okay, now so total supply voltage is given, and across all arms there is a drop, that is E1, E2, E3 and E4. okay, so now for the balance condition अब हमें पता है. so for balance condition क्या है? ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू ये होगा, तभी मीन्स इम्पीडेंस Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3. तो सेम थिंग Z1 इंटू Z4 इक्वल टू Z2 इंटू Z3. तो यहाँ अब कैपेसिटेंस के फॉर्म में इक्वेशन होगा. सो फाइनली क्या होगा? Z1 क्या होगा? R1 प्लस 1 अपॉन जे ओमेगा C1, R4 अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा C4 R4, बिकॉज वो पैरेलल कनेक्शन है, इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा C2 R3. ओके, कैपेसिटर एंड रजिस्टर ही है. ओके, सो अगर इसको सॉल्व करें तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को अगर अलग अलग किया जाए तो फाइनली R1 स्मॉल R1 क्या हो जाएगा? R3 C4 अपॉन C2, एंड C1 का इक्वेशन क्या होगा? C1 जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, C1 इक्वल टू C2 R4 अपॉन R3. सो नाउ फ्रॉम अबव इक्वेशन 1 and 2 द बैलेंस इक्वेशन, एंड इट इज़ फ्री फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी वी कैन से. ओके, now the dissipation factor determines the rate of loss of energy that occur because of the oscillation of the electrical and mechanical instrument. Okay, so dissipation factor equal to 10 delta, and that is nothing but omega C1 R1. okay, अब C1 R1 क्या है? तो omega C1 R1, तो इसकी जगह आई कैन राइट C2, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 का हमने आगे इक्वेशन डिफाइन किया है. तो C1 की जगह अगर मैं वैल्यू रख दूँ तो C2 R4 अपॉन R3, एंड R1 की भी वैल्यू में रख देता हूँ R3 C4 अपॉन C2. तो डिसिपेशन फैक्टर क्या होगा? दैट इज़ ओमेगा C4 R4, बिकॉज ये सब कैंसल्ड आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? ओमेगा C4 एंड R4. ओके, तो दिस इज़ नथिंग बट अ फेजर डायग्राम ऑफ द स्केलिंग ब्रिज. ओके, सो कैपेसिटेंस लीडिंग फॉर्म में आएगा. ओके, so this is charging current, capacitor current we can say, and I2 that is phasor difference of that I1 and IC, that is a I2. and same way E मुझे E यहाँ मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, because we can say that is a lagging form. okay, sorry, so current that is in the leading form, so current यहाँ है capacitor. so finally I got this. okay, तो ड्रॉप यहाँ होगा, तो एक ड्रॉप यहाँ, एक ड्रॉप यहाँ, तो वेक्टर सम ऑफ दैट total P. okay,
Then another bridge, that is a own bridge. The bridge which measure the inductance in terms of capacitance is known as a own bridge. It work on the principle of comparison. The value of unknown inductor is compared with the standard capacitor. Okay, so this is the circuit. So here one arm is inductor form and another is a capacitor. So unknown inductor L1 and arm AB is compared with the known capacitance C4. Okay, the bridge is kept balanced condition by independently varying the resistor R2 and capacitor C2. Okay, so last L1 is an unknown self inductance. So own bridge is used to define the value of inductor. We can say R2, that is a variable non-inductive resistance, R3 is a fixed non-inductive resistance, C2 variable standard capacitor, C for fixed standard capacitor. Okay, so as a balance condition I can say, so R1 plus j omega L1 upon 1 upon j omega C4 equal to R2 plus 1 upon j omega C2 into R2, ये इंटू ये इक्वल टू ये इंटू। सो इसमें हम मोस्टली इंडक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं, नॉट ए कैपेसिटर। बाय यूजिंग कैपेसिटर फाइंड आउट कर रहे हैं, इसलिए मैंने इसमें रखा हुआ है। ओके, सो बाय सेपरेटिंग द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी कैन फाइंड द इंडक्टर L1 इन द फॉर्म ऑफ कैपेसिटर, दैट इज इक्वल टू R2 R3 C4 एंड R1 क्या होगा R3 इंटू C4 अपॉन C2 एंड दिस इज अ फेजर डायग्राम ऑफ दैट। ओके, तो ये आपको याद रखना है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो सर्किट, उसका इक्वेशंस एंड फेजर डायग्राम होना चाहिए। ओके, सो एडवांटेज ऑफ ओन ब्रिज, दैट इज अ बैलेंस इक्वेशन इज इजीली ऑब्टेन, बैलेंस इक्वेशन इज सिंपल एंड डज नॉट कंटेन एनी फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। ओके, डिसएडवांटेज क्या है, द ब्रिज यूज एक्सपेंसिव कैपेसिटर, दैट इज अ मेन डिसएडवांटेज वी कैन से। ओके, एंड लास्टली वी हैव अ Sauty bridge. So Sauty bridge measure unknown capacitance in terms of standard capacitance. So comparing two capacitance, two ratio arm of the bridge consist pure resistor and two consist capacitors, where one is a known value and another is a standard capacitor. So here you can say C1 whose capacitance to be measured, C2 that is a standard capacitor, R3 and R4 that are non-inductive resistance or resistor. Okay, so by balancing all that or for balance theorem, so we can say कि I1 R3, okay, I1 R3 equal to R2 R4 and ये equal to क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, so this equal to this. Okay, so now dividing one equation by each other, so we can say R3 R4 equal to C1 by C2. So finally I can write C1 equal to C2 R3 upon R4. So bridge having a maximum sensitivity when C1 equal to C2. The simplicity of the method is offset by the impossibility of obtaining a perfect balance if both the capacitor are not free from dielectric losses. A perfect balance can be obtained if air capacitor is used. Okay, so here I just ended the session. So in this session we have defined the different capacitor measurement bridges. Okay, so firstly that is Schering bridge, another is a own bridge. Own bridge mostly used for measuring the inductors in the form of capacitors, and lastly we have a Sauty bridge. Okay, so here I just ended the session. Okay, thank you very much.